Hello guys, welcome back to another video. I see my light is flashing. So we are doing shortest path algorithm and problems. Uh, like I know there are two um let's say algorithms to do this question these questions, and I've forgotten both Bellman someone or Dijkstra also. Bellman Ford and Dijkstra, both have forgotten. So let's see. We always have our BFS DFS for graphs. So at the end, shortest path in undirected. You're given an adjacency matrix with having unit weight. Just find the shortest path from source to all the vertices. If it's unreachable to reach any vertex, then maximum. Okay. Source to all the vertex. Source to okay. So we'll do a BFS. Let's say so source to 1 and 3 will be 1 and 1. So source will be 0, 1. So let's see now. We have this graph. We have this graph. So let's see if I remember it. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So after we mark 0 as 0, then we mark 1 as 1. We don't do anything with 2. We mark 3 as 1. Okay. Now we take out 1, mark 2 as 2, and add 2. Then we take out 3, mark 4 as 2. Okay. So we have 2 and 4 on our queue. Then we take out 2 from our queue. So we mark 6 as 3. When we take out 4 from our queue and mark 5 as 3. 5 go, then we take out 6 because it came first. So we mark 7 and 8 as 4. And we uh, get back. We as that is done, we get 5. We take out 5. 5 mark 6 as 4, but 6 is already lesser than that, so do nothing. Take out 7 and mark 8 as 5, but it is already marked something.
lesser, so nothing. And then finally take out 8, and after that try to mark 6 and 7, but they are already marked lesser, so nothing. And that's how this is done, I think. Easy, easy, easy. So let's write this out. Let's create an adjacency list. Adjacency list. And first dot push back dot push back x dot second. So we have uh, graphs, edges. As this is also undirected, I should mark this. Normal VS Code commands don't work in this. Now, what will be the size of this graph? Hmm. What is the size of this graph? Let's just, because we don't know. That's why let's just take, and
is equals to 0, n is equals to max of n comma x dot first. Uh, okay, so this is not what I thought. This is an adjacency list only that is given. So I should not care about this. I should just enter q ue int of int vector in ans of size in n is equals to adj dot size n comma int max q okay q dot push src source while not q dot empty int node is equals to q dot top q dot pop and do a bfs. So and s is equals to q dot size okay for int I is equals to 0 I smaller than s I plus plus node is equals to q dot top and q dot pop. So I have the node and what I do first things in round is equals to 0 because these are like one unit edges. Now answer of node is equals to round first things first the round plus plus and what I do is just add all its elements to the queue q dot for auto x of adj of
node q dot push x. uh, Only I push only if not q dot once q dot push x. If at infinity, then we push it. So 0 comes in, I get the size, which will be 1. Now 0 is popped out. Answer of 0 is equals to 0 for x in. If 1 is int max, it gets pushed. 3 is int max, it gets pushed. And round plus plus should work. Not fund. Okay, so this is a problem. Now to solve this, answer uh, of SRC is equals to 0. One thing. Now so answer of node
Okay, at the start it's -1. GFT seems very slow at times. 21 minutes. I'm happy about that. 21 minutes. Anyone in the chat? 21 minutes with proper explanation and dry run also. So I'm happy. Shortest path in a directed acyclic graph. Okay. So V for E is 2 and edges. I think edges are weights. Find the shorter. Yeah, edges are weights. So I to J and the weight, and we have to find the shortest path. So it's acyclic, one thing, and it's directed because it is acyclic. We will never reach a vertex twice. Okay, so or we will, but that will not lead to a cycle. We can reach the terminal node multiple times or the pre-terminal. Similar logic, very similar logic. Just I have to convert this first. Vector of pairs seems fine. Let's do this. Answer of size V, all of them. Minus one at the start. ANS of 0 is equals to 0. Cool. QUE int Q. Cool. Un fuck. Un what? Ordered map
int comma prayer int comma int adj adjacency list for auto x of edges edges adj of x of 0 is equals to adj of x of 1 comma adj of what x of 1, so only x of 1 x of 1 comma x of 2. So we have made the adjacency list. For so now q has 0 while not q dot emp ty empty. I do the following logic. I do basic BFS. So in s is equal to q dot size. I get the size of the q. For loop for in I is equal to 0, I smaller than s, I plus plus in node is equal to q dot top q dot pop and d is equal to answer of node for auto x of adj of node all adjacent elements of node, what all operations I want to do. First things, if answer of x of 0 x, x dot first is equals to minus 1. If it is minus 1, then answer of x dot first is equals to d plus x dot second. Okay, this is this, and I do q dot push x dot first, else if it is already there, then I just see if answer of x dot first is equals to min of answer of x dot first comma d plus uh,
So I'm not rested at all. So I don't even blame myself right now to make such silly mistakes. Though they are very silly, but at this point, mm, huh, what is the problem? Why is this not working? Unordered map, int, comma, pair, int, comma, int, edj. That is correct. Initialization is also. Hmm. Okay. Vector of parents. Oh my god.
Uh, oh, do that. Push 0. There is no seed for the sapling to grow. Easy peasy. Lemon squeezy. Uh, okay. Why is this an issue? If this changes, should I let it go inside the loop? That does not make sense to me. But the problem that I see because of that, I think I should let it go. But it does not make sense to me. Mm. Okay, I get the if it is something like this. I know my circles are very bad. I should have simply done this. Control C, Control A, Control delete. I should make one circle of nice size. Okay, so let's say mm, these are the nodes. This is 4 per se. This is
2. This is again 4, and this is again 2. That's it. And this is anything 3. Okay. So let's say we do a BFS. So this will become 4. This will become 2. Next round, this will become 8, and this will change this one to 4. But if we did not I like earlier, if we did not push this again onto the queue, uh, I should not have pushed it. It does not make a lot of sense to me. Dijkstra. I'm a little confused. Why do I need to push it into? Okay, 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 okay. I think I got it. Let's say instead of this, I have one more node which was connected with 2, and then I had this. So in this case, 4, 2, 8, 4. Now this would be 8 plus something is 3, 11, and this would change to 6. But as this is already 11, it would not get affected if I don't push this again back. So that's the issue. The extra. I think this is only the extra. Oh, I don't remember what the extra is. I've forgotten, but it was something like this only. Weighted, undirected, and connected graph. Weighted, undirected, and connected graph. Where the link adjacency list, you have to find the shortest distance. All but the graph does not contain any negative weights. Let's just look at a video for the extra ones. Uh, Dijkstra. बोला कि ये है 3, 7, 1. Tap the button, set the pace.
levitating into space. बोला कि ये है 3, बात समझ में आती है। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस वाला एरर तो मुझे चाहिए, डिस्टेंस वाला एरर तो मुझे चाहिए, उसका तो कोई अल्टरनेट कुछ 1 2 9 1 3 2 और 2 3 6, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, आंसर तो हमने बिल्कुल सही निकाल लिया। सवाल है कि किस प्रकार इसको सॉल्व करने वाले हैं, सवाल है कि अप्रोच क्या है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, किस एल्गोरिथम। डरो मत, इस वीडियो में स्पॉन्सर्स नहीं है। चलो, तो हमने बात करी इसको सॉल्व करने की। फटाफट इस ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मैंने कहा इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं इसको ले आया नीचे, ठीक है। मैंने कहा ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी ले आता हूँ मैं नीचे। चलो, ये बात समझ में आती है। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस वाला एरर तो मुझे चाहिए, डिस्टेंस वाला एरर तो मुझे चाहिए, उसका तो कोई अल्टरनेट है नहीं। तो मैंने एक डिस्टेंस वाला वेक्टर या एरे जो भी था बना लिया। मैंने कहा 2 का डिस्टेंस जब मुझे आसानी होगी, बेसिक हमेशा से दर्शाए, या तो मैं प्रायोरिटी को यूज करूंगी, प्रायोरिटी क्यू में जैसे मैंने मिन हीप ले लिया, तो मेरे पास टॉप नोड जो होगी हमेशा वो मिनिमम वाली होगी, या फिर मैंने एक सेट ले लिया, नीड नहीं होता। तो ये दो तरीके हैं यार, यहाँ पर एक सेट है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया कि यार ये मेरा ग्राफ है, ये मेरी एडजेंसी लिस्ट है, ये मेरा डिस्टेंस वाला एरे है और ये मेरा सेट है, बात समझ में आती है। हमने बोला सोर्स नोड क्या है, हमने बोला सोर्स नोड है मेरी 0। ये जो सेट बना है इसमें क्या स्टोर करेंगे, इसमें पेयर स्टोर होंगे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इस टाइप का। पहला वाला इंट दर्शाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ नोड, सेकंड वाला इंट दर्शाएगा आपका नोड, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि यार सोर्स नोड मेरी 0 है, तो इसके लिए एक बार इनिशियलाइज कर दो डिस्टेंस को। तो 0 से 0 का डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो आपने इसको अपडेट कर दिया 0, और आपने यहाँ पर इस सेट को भी अपडेट कर दिया। सेट को भी अपडेट कर दिया तो आप डिस्टेंस कॉमा नोड की मैपिंग अगर निकालेंगे तो आपको क्या नजर आता है कि डिस्टेंस जो है वो 0, और कौन सी नोड के लिए 0 के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया 0,0, एक एंट्री डाल दी इनिशियलाइज करने के लिए। आपने सिंपल सा बोल दिया कि यार ये मेरा सेट है S, इसमें इंसर्ट कर दो, एक पेयर मैंने बना रखा होगा ऐसा। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, टॉप की नोड निकाल ली। तो टॉप की नोड निकाल लेते हैं, हमने बोला कि टॉप नोड निकाल लो, तो हमने टॉप की नोड निकाल ली। तो टॉप की नोड में क्या आया हमारा 0,0 हो गया। ये पहला वाला पार्ट डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा नोड का डिस्टेंस हो गया, नोड का डिस्टेंस हो गया, और दूसरा वाला मेरा टॉप की नोड का नाम हो गया, टॉप नोड हो गया। ये बात समझ में आती है। जब मैं टॉप की नोड को निकाल लेता हूं तो मैं उसको यहां से हटा देता हूं, ये भी मुझे पता है, ठीक है, ये भी मुझे पता है। उसको मैंने यहां से हटा दिया। अब बस मुझे क्या करना है, इसके नेबर्स पे जाना है। कौन सी नोड के नेबर पे जाना है, मुझे टॉप नोड के नेबर पे जाना है। टॉप नोड कौन सी है, 0 है। तो 0 के नेबर पे गए, पहला नेबर क्या है 1। तो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं एक नोड पे खड़ा हूं जिसका नाम है 0, और 0 तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगता है, 0 तक पहुंचने में 0 ही डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। एज पर यहां से मैं देख के पता। So I'm following these two. First I did neat code 150 practice. So these there was a very famous DSA sheet, one of the first sheets ever, first famous sheet ever at least, which was called Blind 75. Neat Code 150 is a superset of that sheet, and I have completed this on another account. So yeah, and now after that, I'm just using this Take You Forward by Striver. Uh, I think Striver, this is very vast. So it has 455 problems. So this is much vast, but and has very repeated questions. And I think I'll again do Neat Code 150 once I'm done, but at that time I'll just move very fast with this. I'll not do it on YouTube also. I'll just go here for my own thing. I'll do it. So yeah, whatever. I have 10 days to prepare more. 10 days. पता लग रहा है 0 से मैं कहां तक जा सकता हूं, आपने कहा 1 तक जा सकता हूं विद डिस्टेंस 5, ठीक है, विद डिस्टेंस 5। आपने कहा 2 तक भी जा सकता हूं विद डिस्टेंस 8, तो मैंने बोला मैं 2 तक भी जा सकता हूं विद डिस्टेंस 8। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 1 तक पहुंचने कितना डिस्टेंस लग रहा है, 0 + 5 5। तो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी को अपडेट कर दिया 5 के साथ, क्योंकि 5 लेस देन इन्फिनिटी है। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मैंने देखा 8 + 0 8, 2 तक पहुंचने में 8 डिस्टेंस लग रहा है, और 8 इन्फिनिटी से कम होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई है, ठीक है।
अब ये दोनों चीजें जब हमने यहाँ पर कर दी है, वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यार इनकी एंट्री हम इस सेट में भी डाल दें। तो हमने पहली जो एंट्री डाली वो डाली किसकी, 1 के लिए। क्या डिस्टेंस था, 5,1। तो हमने एंट्री डाल दी 5,1 और दूसरी एंट्री में क्या डाली थी, 8,2। तो यहाँ पे 8,2 की एंट्री डाल दी। याद रखना दोस्तों ये सेट है, क्यों नहीं है, तो जिसका भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम पिक करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम फिर दोबारा गए, हमने फिर टॉप की नोट निकाली। टॉप की नोट कौन सी आएगी, मैंने बताया आपको, मिनिमम डिस्टेंस वाली। तो मिनिमम वाली कौन सी है, ये वाली है। तो क्या आ गया, 5,1 आ गया। ये क्या होता है, ये आपका नोड का डिस्टेंस होता है। और ये क्या होता है, ये आपकी टॉप नोड होती है। ठीक है, बात समझ में आती है। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने टॉप से निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला कि फटाफट जो मेरी 1 नोड है उसको एक बार यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक नोड है 1, जहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगता है, जहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस लगता है 5। 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0, 2 और 3, फटाफट बना लो। 1 से 0 जाया जा सकता है, 1 से 2 जा सकते हो और 1 से 3 जा सकते हो। डिस्टेंस क्या लगेगा, 5, 9 और 2। 5, 9 और 2। तो मैंने कहा कि 0 तक पहुँचने के लिए 5 + 5 10 लग रहा है। मैं कंपेयर करने गया, यहाँ तो ऑलरेडी 0 पड़ा है और 0 लेस देन 10 है, तो अपडेट करने की नीड नहीं है। फिर मैंने कहा 2 तक पहुँचने के लिए 5 + 9 14 लग रहा है। मैं 2 पे गया, यहाँ ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ है, 8 तो 14 से ऑलरेडी कम है, यहाँ भी अपडेट करने की नीड नहीं है। मैंने बोला 3 तक पहुँचने के लिए 5 + 2 7 लग रहा है। मैं 3 पे गया, यहाँ इन्फिनिटी पड़ा है, इन्फिनिटी जो है वो 7 से बड़ा है, तो यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको काट के यहाँ पे 7 कर दिया। मैंने इसको काट के यहाँ पे 7 कर दिया। तो मैंने एक एंट्री बनाई है किसकी, 7,3 की। उस एंट्री को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। उस एंट्री को मैंने यहाँ पुश कर दिया। बात समझ में आती है। इसके बाद मैं फिर दोबारा गया, मैंने फिर से अपना एक और टॉप निकाला, ठीक है। मैंने बोला कि यार एक और टॉप निकालो, इसमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला मिनिमम है। तो आपका टॉप आ गया 7,3। आपने इसको यहाँ से कट कर दिया। आपने बोला कि यार ये मेरी नोड का डिस्टेंस होगा और ये मेरी टॉप नोड होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने क्या बोला कि चलो 3 के जैसे नोड बनाता हूँ। आपने बोला 3। Dijkstra is the same logic that we were doing with BFS, just instead of a queue, we are using set. Okay. Um, we are already given an adjacency list, which is good. I'll write one Dijkstra, I think, because I need to practice Dijkstra. Vector int answer of size int n is equal to adj dot size answer of size and QUE and Q dot push src while not I'm not using Q, I'm using priority Q PQ priority Q int pair int comma int first is distance, so particular push 0 comma 0 0 comma src and that's the name it PQ to remember well. PQ priority Q while not PQ dot emp do something. Now, do I have this correct? Yep. It feels odd to not write this, but it's okay. So, what I do in this,
Okay, so this priority queue first thing should be comma vector of pair int comma int comma greater pair int comma int. Okay, so this is a min. I need the minimum element. We can use set. We can use set, and we can get the beginning element also. But I think PQ is good. Uh, no. Int d is equals to PQ dot top dot first int node is equals to PQ dot top dot second PQ dot pop v. This destructure the elements and we pop out the element from PQ. Now next thing for auto x of AD, ADJ of node PQ dot push if answer of x is equals to my friend or answer uh, of x smaller than d plus uh, of 0 x of 1 x of 0 x of 0 x of 1 in that case what I do is I uh, push this element onto PQ answer of of x of 0 is equals to d plus x of 1 PQ dot push
x of 0. I think there could be a mistake here, but let's see. Uh, Parent vector of parent mini ppp parent vector of parent comma int greater